Good morning, everyone. I hope you guys are doing great. Welcome to the morning session. And we have Nikun sir with us today for the morning trading session. Welcome, Imran ji. So, talking about the indexes, guys, it's very flat to negative. I would say the Nifty flattish से negative के around है 25 points नीचे है और बैंक निफ्टी भी तो 0.25% के आसपास में डाउन साइड पे है and Sensex भी flattish to positive है and yes, so let's see how it exactly the. I'm audible, guys. Please let me know if I'm voice that you can hear me properly. Please write yes in the chat, guys. Great. Thank you so much for confirming. Prakash ji, thank you so much. Yes, yesterday natural gas expiry analysis was great, and I hope you guys made the most out of it from the yesterday session. So Nikon sir is here, guys. I am handing over the session to Nikon sir. Am I audible, Vinash? Yes, Nikon sir, you are audible, but your camera is off. Yeah, just give me a minute. I share my screen and we're good to go. Sure, Nikon sir. My screen is visible, right? Yes, Nikon sir. Your screen is visible. You're audible. You're good to go. Okay, so good morning, everyone. Good morning, Avinash, and season greetings to everyone. Christmas is around the corner, so Merry Christmas to everyone, all the people who have joined in for the session. So, keeping that aside, now we'll start the market के बारे में. Nifty, as we have seen, it has been correcting last 5 दिन में 24,800 से almost we have corrected more than 1,000 points. So 5 दिन में almost 1,000 points का correction आ गया है. But crucially, it is hovering near its crucial 200-day exponential moving average. जो 200-day ये में है, that is near 23,690 के आसपास है, and currently the index is at 23,700. So as of now, 20th December जो फ्राइडे का कैंडल था उसके अंदर ही 2 दिन से एज ऑफ नाउ वी आर ट्रेडिंग विद इन दैट रेंज. सो एज ऑफ नाउ ऊपर में 24,000 एक रेजिस्टेंस का काम करेगा, नीचे में 23,500 व्हिच वाज द लो ऑफ दैट डे should act as an immediate support, but as of now falling market में resistance are more important than support. So sell on bounce stance है in Nifty till the time it is below 24,000 for the trading per se for the week ahead. And जब तक ये gap down area नहीं fill होता है जो 24,200 के आसपास है, तब तक bias negative भी रहेगा in Nifty, but it is at a crucial juncture near the 200-day exponential moving average. Previously, it has been respecting the moving average and taking support and seeing some bounce. If you see previously, November maybe it came near the 200-day exponential moving average and took support, and we had a bounce towards almost 25,000. So 24,800 to be precise. So as of now, a crucial juncture पे है. So let's see. But as of now, our stance is negative. Around bounce stance in Nifty. अगर बैंक निफ्टी जिसकी आज मंथली एक्सपायरी है उसके बारे में बात करें तो कुछ इवन बैंक निफ्टी इज ट्रेडिंग विद इन द रेंज ऑफ द फ्राइडे कैंडल. तो 51,630 एंड नीचे में 50,600. तो 1000 पॉइंट का जो रेंज था फ्राइडे का, कल और आज एज ऑफ नाउ वी आर ट्रेडिंग विद इन दैट रेंज. तो ऊपर में 51,500 एक रेजिस्टेंस पॉइंट है, और जब तक 51,650 के नीचे है तब तक हमारा स्टैंड थोड़ा सा सेल ऑन बाउंस ही रहेगा, नेगेटिव स्टैंड है. हालांकि नीचे में थोड़ा सा सपोर्ट है, तो 50,900 एंड 50,800 एक सपोर्ट जोन का काम करेंगे, बट बायस नेगेटिव है इन बैंक निफ्टी. बट टॉकिंग अबाउट बैंक निफ्टी को कुछ डेटा पॉइंट्स हम शेयर करेंगे. जो वीकली वीवैप है बैंक निफ्टी का, दैट इज नियर 51,270. So, and we are trading almost 100 points lower than the weekly VWAP, while the monthly VWAP is at 52,850.
So we are almost 1600-1700 points below the monthly VWAP. This clearly indicating कि upside capped है. So sell on bounce stand should continue going forward for the expiry per se as well. Even max pain is at 51,500 and we are almost 300 points below the max pain level. And the OI concentration की अगर बात करें तो maximum OI on the call side is near 52,000 and 51,500, which is why the 51,000 एक resistance point का काम कर सकता है. While the put OI, the maximum OI is at 51,000 and 51,200. So 51,000 is very crucial because major put OI concentration is near 51,000. So it will be interesting to see how the index react should it go beyond 51,000 on the lower side. So as of now 51,500 एक resistance point है, नीचे में 51,000 का support है. जब तक 51,500 के नीचे है तब तक sell on bounce stance it continue and bearish side put side ही हमारा view है और for the expiry per se क्योंकि एक gap down हुआ था तो जब तक ये gap fill नहीं होगा तब तक एक वो gap resistance point का काम करेगा. So as of now sell on bounce stance है, we are playing on the put side even for the expiry per se and for both the indices Nifty as well as Bank Nifty. बैंक निफ्टी के हेवीवेट्स की अगर बात करें तो एचडीएफसी बैंक एक सपोर्ट बेस है. प्रीवियस ब्रेकआउट को रीटेस्ट करके एक बाउंस बैक आया था कल, लेकिन आज फिर से थोड़ा सा एक 0.5% नेगेटिव है. तो नीचे में जब तक एचडीएफसी बैंक एंड आईसीआईसीआई बैंक हैव द मोस्ट वेटेज ऑफ द बैंक निफ्टी, 50-60% of the combined weightage of the whole index is between HDFC Bank and ICICI Bank. So HDFC Bank ने नीचे से एक बाउंस बैक देखा है प्रीवियस सपोर्ट से 1780 से ऑलमोस्ट 1800 का एक बाउंस बैक आया. तो नीचे में जब तक 1780 के नीचे नहीं ब्रेक होता तब तक एक साइडवेज टू पॉजिटिव और रेंज बाउंड व्यू HDFC बैंक में कंटिन्यू रहेगा. बट ऊपर में हर्डल है लेकिन नीचे में सब प्रीवियस ब्रेकआउट के पास है तो एक बाउंस दिया है. तो 1780 इज अ गुड सपोर्ट फॉर HDFC बैंक और ऊपर में 1830 1840 के एक रेजिस्टेंस पॉइंट है. बट रिलेटिवली बेटर प्लेस है HDFC बैंक एंड इवन ICICI बैंक की बात करें तो it yesterday negated the lower lows formation of last 4 days and वापस एक थोड़ा सा 0.4% नीचे है, लेकिन अपने relatively these two banks are better place than Axis or even IndusInd Bank or Kotak Bank जो private measures है. तो ICICI Bank and HDFC Bank are holding afloat, but Axis is almost trading at 8 months low. अगर मैं चार्ट पे बताऊँ तो एक फ्रेश ब्रेकडाउन दिया एक्सिस बैंक ने, तो वीकली स्केल पे देखे तो ऑलमोस्ट 7 मंथ लो पे ट्रेड कर रहा है. तो रिलेटिवली ICICI बैंक एंड HDFC बैंक आर ट्राइंग टू keep the index afloat, but Axis, Kotak and IndusInd Bank थोड़ा सा नेगेटिवली प्लेस है तो एक रेंज शिफ्ट होते रहेगा. बट 51,000 क्रूशियल है आज की एक्सपायरी पर से, और 51,000 पे पुट राइटिंग काफी हैवी है. तो इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी हाउ द market reacts and how the index reacts once we reach at that point. But as of now the stance is negative. अगर stock specific की बात करें तो I think intraday per se I think एक stock जो समझ में आ रहा है is KFin Tech. I think KFin Tech आज intraday के लिए एक अच्छा ट्रेड सेटअप है. Almost the stock is at all time high जबकि मार्केट इज नॉट फॉलोइंग द बुल्स. तो KFin Tech क्लियर आउट परफॉर्मेंस है एंड रिलेटिवली बेटर ऑफ है. तो द स्टॉक इज ट्रेडिंग ऑल टाइम हाई. तो व्हाट वी कैन डू इज वी कैन हैव एन इंट्राडे बाय सेटअप इन KFin Tech. वी कैन बाय एट CMP कीपिंग 1450 as a support and look for 1520 and 1530 on the higher side. So intraday के लिए एक स्टॉक जो समझ में आ रहा है that is KFin Tech. The stock has given a breakout on the last 2 trading sessions and fallen flag का एक breakout है and the stock is relatively outperforming the index. So ऊपर में 1520 के target के लिए with the support of 1450 intraday play for the day. So I think
we have shared the data points with regards to the expiry जो बैंक निफ्टी की आज expiry है, and we have shared the relevant data, that is VWAP कहाँ पे है, weekly VWAP के आसपास है, weekly VWAP के 100 पॉइंट नीचे है, monthly VWAP के तो almost 1500 पॉइंट नीचे है, तो which clearly suggests that upside capped as of now, and major call concentration is between 51,500 and 52,000. 52,000 फिलहाल out of picture है because almost 800 points है, तो 51,500 call OI and 51,000 put OI. So it will be between these two how the index reacts once we reach that level. So I think 51,000 should be crucial, but ऊपर में 51,500 is the resistance point as of now. जब तक उसके नीचे है तब तक हमारा bias negative ही रहेगा. So great. So guys, we have already shared an intraday trade on K Fintech, and the levels are, we have to buy it near the current market price, which is trading near 1485. 1485 के आसपास में ट्रेड कर रहा है. स्टॉप लॉस विल बी 1450. 1450 का स्टॉप लॉस है, and the target for the upside will be 1520, right? So this is the intraday trade for today. And one more CDI idea I would like to share, which is Petronet Limited. So एक almost consolidation breakout दिया है आज 340 के ऊपर. तो what CDI idea हमारे when terminal पे flashed है. So what we can do is buy at CMP Petronet, keeping a support of 334, and we can look at 366 as a target. So एक CDI idea है, तो एक week के पर से है, 1 week के perspective से है. So एक range breakout है on the daily scale, and the stock almost 4 दिन से it is making higher lows, and wherein the index has corrected but the stock is making higher highs. So that is a relative outperformance that we have seen in Petronet LNG. So we can buy at CMP, that is 344, keeping a support of 334. We can look at with a target of 366 on the high side. So 1 week का time horizon रहता है generally the CDI idea. So we can position the stock as per the, you can take a position sizing as per the week per se, not an intraday trade. So one intraday, that is K Fintech, we have shared, and CDI idea, that is Petronet, we have shared on the terminal as well, on the this live video as well. So I would like to repeat once again, Nikun sir, we have shared another trade on CDI on Petronet LNG, right? Yes. Currently trading near 344. We have to buy it at the current market price. The stop loss will be 334. Yes. And the target for the upside will be 360. Yes. 366. 366. Okay. Yeah. So guys, I've revised the target. Please, I'm pinning it as well. So as of now, Nifty is trading relatively flat, almost 15 point ऊपर नीचे के पास है, 23,730 के आसपास है. So and Bank Nifty is comparatively थोड़ा सा अंडर परफॉर्मर है, but 140 पॉइंट है, but 50,000 इंडेक्स पे 140 पॉइंट is not that major, but bias as of now is negative. So play accordingly, be on the put side till 51,500 is not broken on the high side. एक sell on bounce stance आपको maintain करना पड़ेगा. नीचे में 51,000 as of now support है, because maximum put OI is at 51,000. So 51 OI concentration भी ये 500 पॉइंट के आसपास ही है. 51,500 कॉल में maximum OI है, and 51,000 put पे maximum put OI है. So as per that derivative data, 500 points का एक range as of now बता रहा है. So we need to see how it reacts once the index goes near those levels. So Nikun sir, as we know, today is Bank Nifty monthly expiry. Yeah. So do we have any potential trade for the same, like koi strike if we can keep on radar for the entire day, and after that we can have an entry in it? Yes, I think strike जो हमारे radar पर है, that is 51,200 put and 51,300 put. So 51,200 put is at 120 के आसपास है. So I think अगर bounce आता है near 80, then we can try to play this range. But as of now, there is no trade. But I think 51,200 is the strike, and 51,300 put. We are going slightly in the money so that time decay का factor थोड़ा सा अपने को hurt ना करे. So which is why 51,300 and 51,200
strike put should be on your radar. And अगर 51 250 के आसपास 300 के आसपास एक bounce आता है, then you can use that bounce to buy those puts. So those strike 51,200, 51,300 हमारे radar पर है. Okay. Great. So guys, we are tracking Bank Nifty 51,200 put and 51,300 put. And इसके अलावा if there will be any other trade in between the session, we'll definitely update you. And let's take few stock queries, Nikunj sir. Yeah, no worries. That would be good. So what is your view on Praj Industries? think प्राज एक शार्प अपमूव के बाद लास्ट 2-3 वीक से कंसोलिडेटिव मोड में है, लेकिन नीचे में अच्छा सपोर्ट है 780 का. तो जब तक 780 ब्रेक नहीं करता, आई थिंक यू शुड कंटिन्यू टू बी लॉन्ग इन प्राज. अगर आप फ्रेश एंट्री लेना चाहते हैं तो आई थिंक 780 के सपोर्ट से ले सकते हैं. ऊपर में 840 के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग अपमूव आ सकता है. अगर 840 निकल जाता है तो ऑलमोस्ट 880 900 के टारगेट्स भी आ सकते हैं इन प्राज. तो नीचे में 780 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है. तो आपको फ्रेश एंट्री लेनी है तो आई थिंक यू कैन टेक इट विद द 780 के सपोर्ट से and look for 840 and 890 on the higher side. Okay, great. Everyone, Power Grid bought. I have 315 strike put. So the Danisher had bought Power Grid 1350 315 put 4 lots at 9.75. So could you please update on this strike? Okay, so I think the Power Grid has corrected, but थोड़ा लो बीटा काउंटर है. तो और अपने प्रीवियस 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास भी है, तो एक सपोर्ट जोन पे है. तो आई थिंक अगर आप प्रॉफिटेबल है इन द पुट तो यू शुड ट्राई टू बुक आउट इन दैट पुट ऑप्शन. दैट इज व्हाट माय व्यू इज. या एक ट्रेलिंग स्टॉक, जैसे अगर स्टॉक स्पॉट में 320 के ऊपर चले जाता है तो आप एग्जिट कर दीजिए पुट को. ग्रेट. Aryan, I have a question of you on Indian Hotel for 2-3 days. I guess we have been recommending Indian Hotels and Lemon Tree from a very long time. I guess it's 2-3 हफ्ते से the hospitality sector as a whole has been doing good. Indian Hotel also 800 के ऊपर last almost 2 weeks से it is continuously making higher highs. Stock all time high 880 के आसपास 884 का हाई करके थोड़ा सा करेक्टिव हुआ है. तो एक पुल बैक रैली है. तो आई थिंक 850 से 845 is a good re-entry point in Indian Hotel. तो 845 से 850 के बीच में आप एंटर कर सकते हैं, keeping a support of 830 and look for 880 on the highest. Great. So what is your view on SBI and bought at 830 levels? 830 पे लिया है तो I think relatively it has been doing good. 810 is immediate support. अगर 810 ब्रेक करेगा तो और करेक्टिव टियर्स 790 हो सकता है. तो 810 के स्टॉप से होल्ड कीजिए. अगर 810 ब्रेक कर देगा तो आई थिंक यू शुड एग्जिट एंड री एंटर नियर 780 जोन्स. सो एज ऑफ नाउ 810 के स्टॉप से होल्ड कीजिए. लुक फॉर 845 850 ऑन द हायर साइड. ग्रेट. Tried Turbine. Can you spell it? TRITURBINE. TRI. Try Turbine. TURBINE. That's Triveni Turbine. 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 Okay. So stock कोई मेजर उसमें नहीं है, बट वीकली स्केल पे देखे तो एक रेंज में ही है. ऊपर में 820 के रेजिस्टेंस है और नीचे में 690 का सपोर्ट है. तो रिलेटिवली इट हैज बीन डूइंग गुड, बट थोड़ा सा करेक्टिव हुआ है 840 850 से 100 पॉइंट ऑलमोस्ट ऊपर से दे दिया. बट नीचे में एक 720 के आसपास 710 का एक सपोर्ट है. तो वहां पे इज अ गुड एंट्री पॉइंट. अगर आपका ऑलरेडी लॉन्ग पोजीशन है तो कीप अ स्टॉप सपोर्ट ऑफ 715 एंड होल्ड. एज ऑफ नाउ कोई ट्रेड सेटअप नहीं है, लेकिन 5 दिन से लोअर लूज कर रहा है और प्रीवियस स्विंग लो के पास है 730 का. तो अगर 730 होल्ड करता है तो एक बाउंस बैक टुवर्ड्स 760 कैन नॉट बी रूल्ड आउट. सो 730 के सपोर्ट से होल्ड कीजिए. लुक फॉर 770 ऑन द हायर साइड. This suggestion PEL for short positions. PEL.
तो पीएल ऑलरेडी एक काफी करेक्टिव मूव आ गया है, तो आई थिंक एक पुल बैक पे शॉर्ट करेंगे तो दैट वुड बी अ गुड सजेशन। तो अगर अभी स्टॉक चल रहा है 1082 स्पॉट्स के आसपास, तो 1120 के आसपास आएगा तो 1120 1140 इज अ गुड बाउंस पे शॉर्ट करेंगे तो दैट वुड बी अ बेटर प्ले रादर देन लोस पे शॉर्ट करके अगर कवरिंग आ गई तो इट कुड your position could be making a lot of losses. So 1120 1140 के आसपास आएगा, so use that opportunity to go short in PEL. Great. So what is your view on TCS for 2 weeks? In TCS हमने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के पास सपोर्ट ले रहा है एज ऑफ नाउ। लास्ट 2-3 बार भी वहां से सपोर्ट लिया है, कल भी एक अच्छा ऑलमोस्ट सेम प्राइस 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से ही सपोर्ट लिया है एंड दे शोन सम रिकवरी और आज ऑलमोस्ट 1% हायर है। तो नीचे में 4100 इज योर क्रूशियल लेवल। अगर 4100 होल्ड करता है तो अगर आपको बाय ट्रेड करना है तो 4100 शुड बी योर स्टॉप, and for 2 weeks you can see 4300 4350 on the higher side. So TCS 4100 के support से look for 4350 on the higher side. So Sayandeep is asking for any intraday trade in SBI, and since we can see a dip in it, so थोड़ा bounce पे buy कर सकते हैं intraday पे। SBI right? SBI का अगर मैं intraday chart 15 मिनट भी देखूं तो आई थिंक एक रेंज में ही है, बट नीचे में 815 का एक सपोर्ट है। तो अगर आपको लॉन्ग के सपोर्ट से लॉन्ग कर सकते हैं फॉर 8 to 1% का टारगेट के लिए। सो 820 है, 815 के सपोर्ट से लुक फॉर 820 और 830 ऑन द हायर साइड। देयर इज नो ट्रेड एज सच, बट अगर आपको लॉन्ग करना है तो यू कैन डेफिनेटली डू दैट इन SBI. But our view as of now is that sell on bounce in Bank Nifty 51500 is the resistance point. पीछे से अच्छा bounce back आया almost 100 point का in Bank Nifty. So I think you should definitely be on the put side till 51500 is not broken on the higher side. Right. So we'll take 2 more stock queries, Nikul sir. And Yeah. before we end the session, if there will be any trade or if there are any strategies in Bank Nifty, as we can see, it's already recovered nearly 100 points. Yes. So if there will be any strategy in which we can play around in bull call spread or anything, so we'll definitely keep an eye on that as well. We can do a strategy as in we can do a barefoot spread. So 51-200 का put लेके 51-100 का put बेच सकते हैं. The costing is hardly 22 points. So 51-200 put is at 87 and 51-100 put is at 56. So hardly, if I calculate, तो 30 पॉइंट्स का स्प्रेड है। तो आई थिंक बेपुट कर सकते हैं 51-200 का पुट बाय करके 51-100 का पुट बेच सकते हैं। Then look for 30 points का कॉस्टिंग है, तो 70 points is your maximum profit, 30 is the maximum risk in this strategy. Great. Yeah. So guys, we have shared the trade of bear put strategy. Yeah. That we will be going to initiate in Bank Nifty. Buy 51200 put, 51-200 put we have to buy, and sell 51-100 put. The combined premium will be, and the max reward for the upside will be 70 points. हमें 70 points का total profit मिल सकता है, right? So this is the strategy that we have to play. Yes. So we'll take Nikul sir 2 more stock queries, then we'll end the session. I think अगर अपना strategy देखे तो it's already 12 points in the money. तो 30 points का costing अभी 42 हो गया है, तो I think decent. But I think you should continue to be on the put side. It's on bounce. Stance should continue in Bank Nifty. Great. So what is your view on Zomato? Can I buy at this price? Zomato थोड़ा सा करेक्ट हुआ है, तो I think it's a good re-entry point. So definitely you should consider going long on Zomato, keeping a stop of 265 and look for 280 on the higher side, 280 285 on the higher side. Great.
So this will be the last query, guys. What is your view on MCX for short and mid-term view? So MCX ऊपर से करेक्ट हुआ है, बट एक्सचेंज रिलेटेड कैपिटल मार्केट थीम एज अ होल हैज बीन डूइंग गुड. बीएससी, सीडीएसएल, इवन केफिन टेक जो हमने शेयर किया है, कैम्स, एमसीएक्स, so the whole basket is doing good. तो आउट परफॉर्मेंस है इन द होल सेक्टर एज अ होल. तो एमसीएक्स भी ऊपर से थोड़ा सा करेक्ट हुआ है, बट नियर सपोर्ट जोन है. तो नीचे में जब तक 6200 ब्रेक नहीं करता, 6200 के सपोर्ट से आप बी ऑन द लॉन्ग साइड इन एमसीएक्स and look for 6800 के टारगेट के लिए. So short to medium term 6200, 6150 should be your what नीचे में support या stop, and look for 6800 on the higher side. Great. So I guess that's it, guys, from our end in terms of covering all the stock queries. And if we miss any of the stock queries, please make sure you post it on Stockholm, right? And just to tell, the bear put again is at 40-45, so I think 12-14 points का एक swing है in the bear put strategy. 30 का cost था, अभी 40-45 है. So I think when you turn this strategy, you'll definitely win. Great. So guys, please hold the strategies and continue holding this until unless we get some a little upside in it. अगर आपको आपका 50% का upside दिख जाता है वहाँ से, please trail your stop loss so that from there you will not make any losses, right, Nikunj sir? Yeah, definitely. So before we end the session, Nikunj sir, would you like to add anything more, or would you sum up the session, then we'll wrap up the session? Yes, I think Nifty relatively better है. आज थोड़ा सा flattish to positive territory में, Bank Nifty थोड़ा सा pain में है, but volatility could be there because it's a monthly expiry of Bank Nifty. So be tight on your stop losses whichever way you're trading. So नीचे में 51,000 put पे 51,000 put has a maximum OI and 51,500 call पे maximum OI. So be mindful of these two strikes. अगर either or position unwind होता है, so that could be major swing on either side. So please trade with strict stop losses and don't trade in hope of recovering the premium, because the premium may dissolve very quickly. So time value, time decay is a major factor because it's on expiry day. So yes, I think that would be all. I think we'll see in the afternoon session अगर कोई 0-0 play रहेगा. Great. So that's it, guys, from our end. Thank you so much for joining the session. Thank you so much, Nikunj sir. Please make sure you join us today in the Bank Nifty monthly expiry at 2:30 p.m. Right. So that's it, guys, from our end. Thank you so much, Nikunj sir. Thank you everyone. Avinash, thank you everyone for joining in. Have a good day.